In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, may mercy, peace, and blessings of Almighty Allah be upon all of you. Welcome you all, students. This is our second lecture, and today we are going to talk about branches of linguistics. This lecture is for those students who have been learning in BS or MA English, or those who are actually aspirants of English lecturership part linguistics. So let's study today. This is all about the branches of linguistics. What are the branches of linguistics? So here are three: psycholinguistics, sociolinguistics, anthropological linguistics. Of course, literary stylistics, applied linguistics, discourse analysis, and here is the last one, forensic linguistics. So these are some of the branches of linguistics that today we are going to learn about in a very simple manner. Keep in your mind that this is our lecture. We are going to make their understandings of the branches of linguistics in short. It means this is not the detailed one lecture, and the very comprehensive lecture would be the other one, in which we are going to describe what is psycholinguistics and what are actually the areas in studies in psycholinguistics, because there are so many theories and areas and things to be discussed and studied. In this regard, we would figure out the other branches of linguistics and their areas, but our concern in this lecture is totally to the point and short, to learn about the simple definitions and understanding of branches of linguistics. Let's study. This is our lecture 2. Number 1, psycholinguistics. What is psycholinguistics? So here is the definition. Psycholinguistics are psychology of language. Now these are very important words. Psychology of language. Psycholinguistics, psychology plus language, is concerned with the relationship between language and mind. और साइकोलॉजी और लैंग्वेज, जाहिर सी बात है, उसका ताल्लुक जो है वो लैंग्वेज और माइंड के साथ है. तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड माइंड, how language is been processed in mind, is actually psycholinguistics. It is about production, comprehension and acquisition of language skills. जाहिर सी बात है, जब हम लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हमारे माइंड में जो है वो हम कैसे ज़ुबान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको हासिल कर रहे हैं. सो ये जो स्किल्स होती हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स. साइकोलिंग्विस्टिक्स टू द पॉइंट आर, इन शॉर्ट, वी कैन से दिस इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड माइंड, हाउ language is been processed into the learner's minds. So here is a picture would simply define what is psycholinguistics. आप देखें यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि how things are going on in one's mind when we speak. So this is all about psycholinguistics. There are some of more definitions we are going to learn, and as you know, Longman dictionary, language teaching and applied linguistics, ये क्या कहती हैं, ये डिक्शनरी कहती हैं कि साइकोलिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ, नंबर ए, अकॉर्डिंग टू लॉन्गमैन डिक्शनरी, कि इसकी डेफिनेशंस के मुताबिक नंबर 1 साइकोलिंग्विस्टिक्स क्या है? मेंटल प्रोसेस दैट अ पर्सन यूजेस इन प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज. नंबर 1 तो ये कि हमारा जो मेंटल प्रोसेस है, जब हम कोई ज़बान जो है वो बोल रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं, तो उसमें हमारे माइंड का प्रोसेस क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो किस तरह से काम कर रहा होता है. तो नंबर 1. एंड नंबर 2, हाउ ह्यूमन लर्न लैंग्वेज, और इंसान जो है वो कैसे जुबान सीखता है. सो अकॉर्डिंग टू लॉन्गमैन डिक्शनरी,
there are just two things to be learned into psycholinguistics. Here is more understanding. Psycholinguistics includes the study of speech perception, a role of memory, concepts, and other processes in language use, and how social and psychological factors affect the use of language. साइकोलिंग्विस्टिक्स में जो है वो एक तो स्टडी आ जाती है स्पीच परसेप्शन की कि हम स्पीच को कैसे समझते हैं और हमारे जो मेमोरी है ये जो यादाश्त है इसका रोल क्या है, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो माइंड के अंदर लैंग्वेज के हवाले से चलते रहते हैं और हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और सोशल और साइकोलॉजिकल कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ज़बान के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आर दीज ऑल थिंग्स आर द एरियाज ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स इन अ nutshell. So this was all about. Here is another branch of linguistics, that is sociolinguistics. What is sociolinguistics? Sociolinguistics is the study of language in human society. The study of language in relation to social factors, that is social class, right, educational level, and types of education, age, sex, ethics, and a region, etc. So here, if we see, sociolinguistics is the study of language in human society. लैंग्वेज की जो है वो हम सोसाइटी के अंदर जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो वो सोशियोलिंग्विस्टिक्स होती है, और उस स्टडी के अंदर जो है वो हम रिलेशन शो कर रहे होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं जब हम लैंग्वेज सोसाइटी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो सोशल क्लास जो है किस सोसाइटी के क्लास में क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, ये फैक्टर्स मालूम करते हैं हम इस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स के अंदर। एजुकेशनल लेवल क्या है, जब हम बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं तो उसका लेवल क्या है, कौन सी क्लास में, कहाँ से कौन सी ज़ुबान शुरू करनी चाहिए, ये भी स्टडी हमारी सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंदर आती है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो है वो टाइप जो है वो एज, सेक्स, यानी किस एज में हम जो है ज़ुबान ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं, और ज़ुबान और सेक्स का क्या ताल्लुक़ है, यानी जेंडर का क्या ताल्लुक़ है, मर्द जो है वो किस तरह से लैंग्वेज सीखता है, औरत किस तरह से लैंग्वेज सीखती है, यानी जेंडर के हवाले से भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि लैंग्वेज कौन जल्दी सीख रहा है, कहाँ से, और एथिक्स के हवाले से जब हम बात करें अरीजन, जब हम अरीजन की बात करें लैंग्वेज और सोसाइटी के अंदर, तो ये सारी स्टडी जो है वो सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहलाती है। Here is another chunk of definition. The field is connected to many aspects of linguistics, such as language and nation, language and society, language and culture, and many other similar topics. Thus, sociolinguistics is a study of relationship between language use and structure of society. तो यहाँ पे अगर हम देखें, द फील्ड इज कनेक्टेड टू मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ये फील्ड जो है वो बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स के जो एस्पेक्ट्स हैं उससे ताल्लुक़ रखती है। जैसे लैंग्वेज और नेशन, लैंग्वेज और नेशन का क्या ताल्लुक़ है, एक लैंग्वेज जो है कौम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो सीखना पढ़ना। लैंग्वेज जो है सोसाइटी के अंदर जो है वो किस तरह से काम कर रही होती है, लैंग्वेज कल्चर के अंदर कैसे है, और मैनी अदर सिमिलर टॉपिक्स आर actually the areas of sociolinguistics. Thus, sociolinguistics is the study of relationship between language and structure of society. इसी वजह से हम कह रहे हैं कि sociolinguistics जो है वो रिलेशनशिप है किसके दरमियान, एक लैंग्वेज यूज़ के दरमियान और दूसरा हमारी जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है इसके दरमियान। एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स. Anthropological linguistics is the branch of linguistics which studies the relationship between language and culture in a community, its traditions, beliefs, and family structure. In a nutshell, we could say influence of culture on language. What is the influence of culture on language? इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, यानी कल्चर का जो है वो लैंग्वेज के ऊपर क्या असर होता है, या इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन है। अगर हम बात करें लैंग्वेज और कल्चर, लैंग्वेज कल्चर के साथ कैसे ताल्लुक़ रखती है।
यानी आप देखें कि बहुत सारे कल्चर्स जो है वो उसमें बहुत सारे ट्रेडिशंस, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं वो जो लैंग्वेज के ऊपर असरअंदाज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, anthropological linguists have studied the ways in which relationships within the family are expressed in different cultures. Kinship terminology, and they have studied how people communicate with one another at certain social and cultural level events. Example, ceremonies, rituals, and meetings, and then related this to be overall structure of the particular community. Some areas of anthropological linguists are closely related to areas of sociolinguistics and ethnography of communication. तो यहाँ पे जो है वो समझा रहा है. चलिए, हमने यहाँ पे एक बात की कि कल्चर जो है वो लैंग्वेज के ऊपर असरअंदाज होता है. तो यहाँ पे जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्ट्स हैव स्टडीड द वेज इन विच रिलेशनशिप्स विद इन फैमिली आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट कल्चर्स. और किनशिप टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें, मुख्तलिफ जो है वो किनशिप टर्मिनोलॉजीज़ मुख्तलिफ कल्चर्स में मुख्तलिफ होती हैं. और फिर जो है सेरेमनीज़ की बात करें, रिचुअल्स की बात करें, मीटिंग्स की बात करें, तो इनके अंदर मुख्तलिफ जो है वो रवायात जो है वो वर्ड्स बन के तो लैंग्वेज के ऊपर अंदाज होती हैं. So this study is called anthropological linguistics, and this is very important branch of linguistics, we could say. Here is an example कि कल्चर जो है वो कैसे असरअंदाज होता है. She is a power pointer. Now someone, they are hunters and they are talking to each other and they're talking about this dog that she is power pointer. अब power pointer, इसका मतलब ये जो power pointer word इन्होंने इसके लिए यूज किया है, ये power pointer is not in exactly word, but they have deduced the meaning. They have created, we could say, an origin of a word just because of that culture of computer, right? So this um, uh, induce or induction of so many words into a language, all cultural things into language, that study is actually called anthropological linguistics. Students, let's learn about literary stylistics. What is literary stylistics? Literary uh, stylistics is concerned with style and linguistics. Linguistics के अंदर मुख्तलिफ styles जो है ये हमारे कहलाती है literary stylistics. जैसे कि आप देखिए, the study of variation of language, the use of language in communication has also led to new ways of studying literary texts and nature of literary communication. The style of religious sermons, आप देखें, style of religious sermon, the style of sports commentary. A study of variation of language, the use of language in communication. हम कम्युनिकेशन के अंदर मुख्तलिफ वेरिएशंस लैंग्वेज की इस्तेमाल कर रहे होते हैं. जैसे कि आप देखें, अगर रिलीजियस सर्मन्स के अंदर हम बात करें तो जो मौलाना हजरात हैं वो अपने एक स्टाइल के साथ बात कर रहे होते हैं. अगर जो है वो रिलीजियस कोई पॉइंट भी लिखें तो इस उसके लिखने का भी एक अपना अंदाज होता है. अगर हम स्पोर्ट्स कमेंट्री की बात करें तो उसका एक अपना अंदाज होता है. सो दिस difference or variation of language is called literary stylistics. For example, number A, person's distinctive language habits are the set of individual characteristics of language use. B, दूसरा ये, set of group of people at one time. एक तो पर्सन्स इन डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज हैबिट्स, मतलब एक
बंदे की मुख्तलिफ जो लैंग्वेज हैबिट्स होती हैं, एक मुख्तलिफ, हर इंसान का एक बोलने का अपना स्टाइल होता है, अपनी हैबिट्स होती हैं। और फिर अगर हम बात करें एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है, उनका भी एक अपना अंदाज होता है, अपने बोलने का स्टाइल होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहें कि समद स्टाइल, एक बंदा है समद और उसका एक अपना स्टाइल, हम कहेंगे दिस इज दी समद्स लैंग्वेज स्टाइल। अगर हम बाज़ दफ़ा हिस्टोरिकल बात कर रहे होते हैं, एलिज़ाबेथन राइटिंग स्टाइल, एलिज़ाबेथन राइटिंग स्टाइल एक अपना स्टाइल था। सो वी आर रेफरिंग एलिज़ाबेथन स्टाइल। So these styles are also the part of a study of literary stylistics in linguistics. Let's study another branch of linguistics, and that is applied linguistics, the study of second and foreign language learning and teaching. In a very short and in a simple way, applied linguistics is the study of second and foreign language learning and teaching. जब हम फॉरेन लैंग्वेज की या सेकंड लैंग्वेज की बात करें कि वो कैसे सीखी जाती है या सिखाई जाती है, तो ये जो स्टडी है हमारी सेकंड लैंग्वेज सीखने की, फॉर एग्जांपल हम जो है वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं या अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं क्लासेस के अंदर। सो दिस process of learning and teaching is the example of our study of applied linguistics. Number two, the study of language and linguistics in relation to practical problems such as lexicography etc. और लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स में जो है प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होते हैं, जैसे लेक्सिकोग्राफी, जब हम कोई डिक्शनरी बना रहे होते हैं तो उसमें जो हमें प्रॉब्लम्स जो है जो फेस करने पड़ते हैं, वो भी हमारे अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का हिस्सा हैं। ट्रेडिशनली, the primary concern of applied linguistics has been second language acquisition, theory, and pedagogy. And this is also one of the part of definition कि applied linguistics के अंदर जो है वो हम second language acquisition, theory and pedagogy की बात कर रहे होते हैं। सेकंड लैंग्वेज यानी जो भी हमारी मदर टंग नहीं है, दूसरी ज़ुबान जो हम सीख रहे होते हैं, वो हम कैसे एक्वायर कर रहे होते हैं, यानी जो है वो हम हमें पता नहीं होता, हम कोई चीज़ें सीख रहे होते हैं और उसकी बहुत सारी थियरीज हैं। और पेडागोजी, पेडागोजी कहते हैं द आर्ट ऑफ टीचिंग और लर्निंग अबाउट टीचिंग। सो जब हम टीचिंग के लिए सीख रहे होते हैं कि सेकंड लैंग्वेज कैसे सिखाई जाए, या सीखी जाए, सो पेडागोजी इज कनेक्टेड विद आर कंसर्न विद learning and teaching exactly as we defined at the very first. Applied linguistics is used to know about language, how it is learned and used in order to achieve some purposes and solve some problems such as acquisition, assessment, culture, ideology, media policy, research methodology, etc., according to Wilkins. So this is a very famous definition into applied linguistics कि applied linguistics जो है वो लैंग्वेज के बारे में जानने को कहते हैं, या जो है वो कैसे वो लैंग्वेज सीखी जाती है, इस्तेमाल होती है कुछ ख़ास मकासद पूरे करने के लिए या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिसमें हम लैंग्वेज जो है वो सीख रहे होते हैं, उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं, उनको जांच रहे होते हैं, कल्चर जो है उसको जांच रहे होते हैं, आइडियोलॉजीज़ क्या हैं लोगों की, मीडिया की बात करें, मीडिया पॉलिसीज़ क्या हैं लैंग्वेज के अंदर, रिसर्च मेथोडोलॉजी एग्जैक्टली कैसे होती है, या उसका लैंग्वेज के साथ क्या ताल्लुक है. So these are some of the key definitions we are key areas we are going to discuss into applied linguistics in our later lectures. Here is something more. It is concerned with increasing understanding of the role of language in human affairs
and hereby with providing the knowledge necessary for those who are responsible for taking language related decisions. Now you see जो language policies बनती हैं हमारी और language के हवाले से जो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं या उसके decisions किए जाते हैं. So this is also part of applied linguistics. Here is another branch of linguistics, and that is discourse analysis. Discourse analysis is the branch of linguistics that deals with the study of approaches to analyze written, spoken, signed language or any significant semiotic event. डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो ताल्लुक़ रखती है कि विद स्टडी ऑफ अप्रोचेस जो होती हैं मुख्तलिफ बहुत सारी जो थियरीज होती हैं बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं जो स्टडी होती है वो हम उसकी जब बात कर रहे होते हैं या कोई रिटन कोई चीज़ लिखी हुई है उसकी एनालिसिस कर रहे हैं जैसे कोई पोइट्री है उसकी एनालिसिस अक्सर हम कर रहे होते हैं या कोई प्रोज लिखा हुआ होता है जैसे बेकन एसेज हैं बहुत ही मुश्किल लिखे हुए होते हैं उसकी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कि व्हाट आर देयर मीनिंग्स इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. तो ये जो स्टडी होती है दिस इज कॉल्ड डिस्कोर्स एनालिसिस. स्पोकन साइंड लैंग्वेज या स्पोकन जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो साइंस होते हैं इसकी जब हम बात कर रहे होते हैं या सिग्निफिकेंट सेमियोटिक इवेंट या जो है वो जो इवेंट जो सिग्नल्स होते हैं साइंस होते हैं सेमियोटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ साइंस. सो जब हम साइंस की बात कर रहे होते हैं उसकी अहमियत क्या होती है. सो दिस study is actually called discourse analysis, or they study how sentences in the spoken or written languages form larger meaningful units such as paragraphs, conventions, interviews, etc. या जो है वो हम जब बोल रहे होते हैं लिख रहे होते हैं ज़बान तो उनके अंदर क्या मायने होती है पैराग्राफ्स के अंदर क्या मायने है या जो बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं जो कन्वेंशंस मुख्तलिफ जो है वो मौक़ों पे मुख्तलिफ हम बात कर रहे थे उसकी जब हम एनालिसिस करते हैं सो दिस स्टडी इज़ कॉल्ड डिस्कोर्स एनालिसिस in linguistics. Here is another branch of linguistics, and that is forensic linguistics. Also language and the law. इसको हम दूसरी तरह से अगर बात करें तो language and the law कह सकते हैं कि ज़बान और कानून. A branch of applied linguistics that investigates issues of language in relation to the law, drawing on resources from semantics, acoustic phonetics, discourse analysis, pragmatics, sociolinguistics, and other fields. Issues of concern include forensic identification, speaker identification, legal cases through handwriting analysis, for example, or speech analysis, interpretation for the police and courts, semantic of legal terminology, the legal meanings of murder, manslaughter, homicide, the discourse of police interrogations and legal proceedings, accent discrimination, and the problems faced by non-native speakers and members of minority speech communities when dealing with judicial system. ये देखें कि स्टूडेंट्स इसकी थोड़ा सा हम और ज़्यादा वजाहत कर लेते हैं. अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है वो इन्वेस्टिगेशंस लैंग्वेज की इन्वेस्टिगेशंस के दौरान जो है वो हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जो है कैसे जैसे सिमेंटिक्स हो गया किसी चीज़ में मायने सिमेंटिक्स कहते हैं द स्टडी ऑफ मीनिंग्स इनटू आवर वर्ड्स. हम जो चीज़ बोल रहे होते हैं तो उन वर्ड्स के अंदर अपनी एक मायने होती है. अकॉस्टिक फोनेटिक्स की बात कर रहे हैं कि फोनेटिक्स जो है वो जब ट्रैवल कर रहे होते हैं उसके वेव्स तो उसकी जब स्टडी करें. डिस्कोर्स की बात करें डिस्कोर्स एनालिसिस कोई डिस्कोर्स कोई चीज़ लिखी हुई है उसको एनालाइज कर रहे होते हैं
प्रैग्मेटिक्स की बात कर रहे होते हैं, बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स जो थियरीज के अंदर आते हैं उनकी बात, सोशियोलिंग्विस्टिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो पार्ट ऑफ फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स के हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन लीगल केसेस थ्रू हैंड राइटिंग एनालिसिस। फॉर एग्जांपल हम जो है वो हैंड राइटिंग देख के जो है पता लगाते हैं कि ये जो कोई बात कर रहा है इस ये सही बात कर रहा है कि ये वाकई ये इसकी हैंड राइटिंग है, या किसी जो है वो कोई बंदा मर गया तो हम पीछे से जो है वो उसकी बात करेंगे कि ये वाकई उसकी हैंडराइटिंग थी, तो हम कंपेयर कर रहे होते हैं उसकी जो है लिखाई को। सो दिस स्टडी इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स, या जो ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन हो कि वो वीडियोस आया वो जो हम बात कर रहे हैं या जो क्लेम है वो उसी बंदे की आवाज़ है या ये टेम्पर्ड आवाज़ है, यानी किसी और बंदे की जो है वो कॉपी की गई है और शो किया गया कि ये इसी की आवाज़ है। तो ये सारी जो स्टडी होती है इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ फॉरेंसिक linguistics. So, this is all about the lecture, students. Hopefully, this would have been very helping for all of you. This is our lecture two. Important areas of linguistics for the aspirants of lectureship in English. So here we were talking about this lecture, and this was all about the aspirants of lectureship in English, those who are aspirants and want to make their studies to the point and short. So those were the branches of linguistics we have studied today. So this is equally helpful lecture for those students who have been studying BS and MA English, or who are making their preparations for different competitive examinations. Hopefully, students, this would have been a very helpful lecture for all of you. Thank you very much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.